Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about Sociological Foundation of Education book Unit 2 Culture and Education Sanskriti ebang Shiksha. Before we start the session, we look at our syllabus. देखिए meaning and definition of culture, characteristics of culture, dimension of culture, cultural lag, cultural pluralism, impact of culture and education, role of education in preservation, transmission, and promotion of culture. Okay, so let's start. At first, we know what is culture and education. No? What is the meaning and definition of culture? The first time we janiba what is culture. Okay. The culture can be defined as the social behavior, norm, beliefs, knowledge, art, law, custom, capability, and habit of a particular group of people. Okay. तो कल्चर कहले आमे कौन बुझिथाउ ना गोटे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल रो ओके तो गोटे कम्युनिटी रो बा गोटे कोनोसी संगठन गोटे गोष्ठी रो से मानकर वे ऑफ लाइफ से मानकर जीवन जीवर शैली जोटा हेथाय ओके एवं सोसाइटी रे से मानकर बिहेवियर से मानकर नॉर्म से मानकर बिलीफ तांकर नॉलेज ओके तांकर लॉ तांकर कस्टम तांकर कैपेबिलिटी केमिति का तांकर हैबिट सब कोन रहउची ओके तो ए सब को आमे कोन कहिथाउ ना कल्चर कहिथाउ ओके कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म cults or cultus, cultivating or refining and worship. Okay. Then ଆମେ ଜାଣିବା culture in Indian context କଣ ରହୁଛି okay ଏଠି ଦେଖିଲେ କଣ ନା culture can also be defined as the way of life, the food we eat, language we speak ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଷା ଆମେ କହିଥାଉ, clothes where we worship are all aspect of culture okay ଯେକୌଣସି ପୋଷାକ ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ତାଙ୍କର ରହିବା ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଓକେ ସେ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ ଦେନ୍ କଲଚର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କଣ ରହୁଛି କଲଚର ଇଜ sanskrit and the term sanskrit has been derived from the root Kri to do of Sanskrit language. Okay. So, then ଆମେ ଜାଣିବା three word came from this root Kri. Sanskrit ରେ word ଟା ଆସିଅଛି Kri ରୁ okay. Sanskrit जोटा कि ଆମେ culture କହିଥାଉ ସଂସ୍କୃତି okay. Then प्रकृति कौन basic matter of condition, संस्कृति कौन ना refined matter of condition, विकृति कौन ना modification and decayed matter of condition. Okay. The first कौन ना culture is संस्कृति and the term संस्कृति has been derived from root Kri ରୁ ଆସିଅଛି. Okay. The first प्रकृति कौन ना basic matter of condition जोटा कि basically जो माने कंडीशन टा हमर थाए समाज रे ताकू बेसिक मैटर हम प्रकृति कहिथाउ ओके देन संस्कृति हमें कहले कोन ना रिफाइंड मैटर ऑफ कंडीशन ओके तो गोटे प्रथा चली आसी अछि बट माने टुडे टाइम रे माने आज का टाइम रे से जिंस करबा पॉसिबल नो तो ताकू कोन करा जे ना किछटा हमें रिफाइंड कर देथाउ जोटा कि हमको सुहाइला बळी हमें ताकू चेंजिंगनेस सेथरे नै आस्ताउ ताकू तो ना रिफाइंड मैटर ऑफ कंडीशन सेटा कोन नाम संस्कृति देन विकृति कोन ना modify or decayed matter of condition okay so when we define prakriti it becomes sanskriti and when we damage the prakriti it becomes vikriti okay तो जेबे हमें कौन करते ना प्रकृति को रिफाइन करके ठीक बाटरे लगई थाउ ताको हमें संस्कृति कहि थाउ आ जिते ताको हमें माने माने हम प्रकृति को माने चेंजिंगनेस रे आनी की ताको माने गलत वे रे नहीं जाई थाउ बा माने से जो वे रे हमें ताको रिप्रेजेंट करि थाउ से ठीक है न थे ताको हमें विकृति बोली कहि थाउ ओके विकृति बा विकृति देन व्हाट इज कल्चर for example, greeting by joining both hand in Indian culture, eating by fork and spoon or hands. Okay. Our clothing, etc. Now, culture कौन ना आमे केमती कौन करथाउ ना आमे हाथ को जोड़ी की प्रणाम करथाउ ओके तो एटा कोन ना हम इंडियन संस्कृति रो हम इंडियन कल्चर रो एटा होची माने लेगेसी ओके हमर माने को कालरो हमर इंडियन संस्कृति रो हमर हाथ को जोड़ी की ही हमें नमस्ते कहिथाउ किंतु eating by fork and spoon or hands ए सब कोन ଆମ ବେଶଭୂଷା ଓକେ ଏସବୁ ଆମର କଲଚର ଓକେ ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ anthropologist କିଏ ଏଡୱାର୍ଡ ବି ଟାଇଲର କଣ କହିଲେ in his book ରେ ତାଙ୍କ book ରେ primitive culture said that complex whole which include knowledge belief art law moral custom and any other capability and habit acquired by man as a member of society okay तो
गोटे मनीष को सोसाइटी मेंबर बोली भाबिकी सेमानंकर तांकर कल्चर तांकर कॉम्प्लेक्स तांकर माने लाइफस्टाइल को इंक्लूड करी नॉलेज तांकर बिलीफ तांकर आर्ट तांकर मोरल तांकर एथिक्स सब किछि तांकर कैपेबिलिटी को रिक्वायर करी कि एक्वायर करी कि ओके हमें जो स्टडी करथाउ ताकू कल्चर बोली कहथाउ ओके then according to Philip Kotler कौन ना culture is the set of basic value okay culture होची गोटे basic value जोटा कि perception words behavior learned by member or society institution okay तो ଆମ ସଂସ୍କୃତି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମକୁ ବିହେଭ କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ ସେସବୁ ଶିଖେଇଥାଏ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଆମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେସବୁ ଶିଖେଇଥାଏ ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା characteristics of culture okay culture is learned or can be acquired okay तो culture टा ଆମେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖି ପାରିବା ଏବଂ ନିଜ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ବି ତାକୁ ଆମେ put down କରିପାରିବା okay we do not born with culture we learn from our family media neighbor peers and etc okay तो ଆମେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମ କଲଚର କୁ ନେଇକି ଆସିନଥାଉ okay କୌଣସି ମାନେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସବୁ ଶିଶୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତି କୋଉ ପିଲା ହିନ୍ଦୁଜିମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଲା ପରେ ବାଇଚାନ୍ସ ଏମିତି କିଛି ତା ଲାଇଫ ରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ ବା ଏମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ଆସିଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ସେ କଣ ହବ ନା ଅଲଗା ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଡ ହେଇଯିବ ତ ସେଟା ତାର ଜନ୍ମଗତ ନୁହେଁ ସେଟା ତାର କଣ ମାନେ ତାର ସେଟା ମାନେ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଡେ ବାଇ ଡେ ସେଟା ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ଓକେ କଲଚର ଇଜ ଡାଇନାମିକ changes with changes modification okay in time by time ରେ culture କଣ ହେଇପାରିବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ as per as time environment need culture also take a place okay ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ହବା ହିସାବରେ କଲଚର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଦେନ୍ କଲଚର ଇଜ କଣ ନା ସେୟାର କଲଚର କୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ କଣ ସେୟାର କରିକି ହିଁ ତାକୁ ଚଲେଇଥାନ୍ତି ଓକେ ଦେନ୍ କଲଚର ଇଜ ମ୍ୟାନ ମେଡ କଲଚର ମାନେ କଣ କଲଚର ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାନ ମେଡ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି as we have evolved with the formation deletation modification in culture have taken place okay ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ହିସାବରେ କଲଚର କୁ କଣ କରିପାରିବ ନା ଫର୍ମେସନ କରିପାରିବ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଜିନିଷ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରିକି ତା ଜାଗାରେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କିଛି ଆଡ କରିପାରିବ ଓକେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ ମେଡ then transmission of culture is automatic okay learn of the culture occurs subconsciously sometime okay ତ transmission culture transmission ଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା automatically learning ରେ ଆସି ଯାଇଥାଏ ओके देन देखिबा इट इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर लाइक कौन ये सब को फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी इकोनॉमी पॉलिटी रीजन प्लेस एक्सेट्रा ओके तो एवरीथिंग इन्फ्लुएंस कल्चर टू चेंज एज पर देयर नीड ओके तो समस्त नीड हिसाब रे कौन ना कल्चर टा चेंज हो जाए जोटा कि हम सोसाइटी हम इकोनॉमी की हम पॉलिटिक्स ए सब को कौन करता है ना अफेक्ट करता है देन कल्चर इज ट्रांसमिटेड ओके थ्रू जनरेशन टू जनरेशन कल्चर टा कहि देना ट्रांसमिटेड हे के आसी थाए हम पीढ़ी पर पीढ़ी दर पीढ़ी सर पीढ़ी माने सबुठरो माने कल्चर टा कोन माने लागि के रहि थाए ओके तांकर जे हैतला ता जे बापा जा करथि ता बापा भी सेया करबे ता पर पु भी सेया करबो ता पुर ता पु एम्ति हे की चली थाए then culture is way of life itself okay the culture corner without value beliefs knowledge habit we are nothing and people usually say that we are not culture if we do some activity that is not as per society okay without value beliefs knowledge ଆଉ habit ରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ନିଜର ସାର୍ଥକତା କେବେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓକେ ଆଉ ଲାଇଫ ରେ କିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କିଛି ନର୍ମ ଆଉ କିଛି ହାବିଟ କିଛି ନଲେଜ ଏସବୁ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉଟା କି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୋସାଇଟିରେ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାଏ ଦେନ୍ କଲଚର ଇଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ this is not a single factor culture ଗୋଟେ single factor ନୁହେଁ this is integrated system of knowledge include everything ଆଉ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ include କରିକି ହିଁ culture ଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା start up ହେଇଥାଏ then value beliefs habit language okay human life ର value ସେମାନଙ୍କର beliefs ସେମାନଙ୍କର habit language ସବୁ କିଛି ନେଇକି କଣ ନା culture ଟା integrated ହେଇଥାଏ then characteristics of culture କଣ ନା culture is learned culture କୁ ଶିଖି ହବ culture is shared culture କୁ share କରି ହବ culture is universal okay culture କଣ ନା universal then culture is integrated culture କୁ integrated କରିକି ବି ଜାଣି ହବ then culture is dynamic culture ସବୁ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ତାକୁ ମାନେ modify କରି ହବ transmission ହେଇକି ଆସୁଛି culture ର then culture is based upon symbol okay culture is abstract ବେଳେ ବେଳେ culture କହିଲେ ନା abstract ହେଇଯାଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଟୁଡେ ଲାଇଫ ରେ ଆମ ଆଜି ମାନେ ଏବେକା ଲାଇଫ ରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ
ଆମ କଲଚର ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ନା କଲଚର ବ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ କାମ କରି ନେଇଥାଏ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଯେମିତି କି ବଳି ପ୍ରଥା ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସବୁ ନିୟମ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି କରିବା ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା dimension of culture, cultural lag, cultural pluralism. Okay, so first, culture is a word for people way of life, meaning they way they do think. Okay, culture ଗୋଟେ word ଯୋଉଟା କି କଣ ନା way of life ବୋଲି ବୁଝେଇଥାଏ। Then narrow sense ଯଦି ଜାଣିବା culture କଣ ନା culture means that man made social organization which promote specific habit of thinking and living, specific habit of social interaction, specific way of eating, dressing and living, religious and scientific belief and various material object together with politics and social custom. Okay, tradition and pattern of behavior which cumulatively satisfy the various need of human beings. ओके, तो बहुत लॉन्ग टर्म रहुची तो आपको मैं केमती बुझिबा ना कल्चर माने कहले मैं कौन बुझी तो ना सोसाइटी रे जो सब ऑर्गेनाइजेशन माने स्पेसिफिकली कम्युनिटी है कि से मानकर हैबिट से मानकर थिंकिंग से मानकर लिविंग स्टाइल। ओके, से मानकर किछि स्पेसिफिक हैबिट से मानकर सोशल इंटरेक्शन परस्पर मध्य कथा बार्ता चाली चलनी परस्पर मध्य लेन देन। ओके, तो परस्पर को साहाय्य करबा से मानकर लिविंग सेंस से मानकर रिलीजियस। ओके, ସବୁ କିଛି ହିଁ ନେଇକି କଣ ହେଇଥାଏ ନା କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାବ୍ বা କଲଚରାଲ ଡାଇମେନସନ ମାନେ ଦେଖା ନେଇଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ୱାଇଡର ସେନ୍ସରେ ଯଦି ଜାଣିବା କଣ ଏଟା ଗଲା ନ୍ୟାରୋ। ଦେନ୍ ୱାଇଡର ଆସିଲା culture refer to the all inclusive habit of thinking which shape human behavior in all aspect and in all field of human activity. Culture include all human beliefs pattern of behavior and all academic artistic moral religious belief so double belief ହେଇଯାଇଛି believe together with all achievement in all field of human life. Okay, so basically ନ୍ୟାରୋ ସେନ୍ସ ରେ କଣ ହଉଥିଲା କଲଚର ନା କଲଚର ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନା ତାର ସ୍ପେସିଫିକ ହାବିଟ ଉପରେ ଫୋକସ ଅପ୍ କରୁଥିଲା, ସ୍ପେସିଫିକ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେସନ ଉପରେ ଫୋକସ ଅପ୍ କରୁଥିଲା। ବଟ୍ ୱାଇଡର ସେନ୍ସ ରେ କଣ ନା କଲଚର ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ କଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ ର ବିହେଭିୟର, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ର ହଉ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ନୁହଁ ବଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ନିଡ୍ସ ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବିଲିଫ୍ସ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ବିଲିଫ୍ସ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଟର୍ନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଉପରେ ଏକାଡେମିକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଉପରେ। ଓକେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ମାନେ ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉ ମାନେ ରୀତିନୀତି ବା ଆଜିକାଲିକା ଚଳଣି ଉପରେ ଯୋଉ ଆମେ ୱାଇଡର ସେନ୍ସ ରେ ଦେଖିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କଲଚର ର ଡାଇମେନସନ ଉପରେ ରଖିଥାଉ। ଓକେ, ଦେନ୍ କଲଚର ଇଜ ଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହୋଲ that consist of everything with thing to do have as a member of society. ଓକେ, ୟାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ବାରିଷ୍ଟେଟେଡ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर कौन ना इंडिविजुअल कल्चर जोटा कि आन इंडिविजुअल कल्चर सम पर्सनल ट्रेट किछि पर्सनल ट्रेट को नेकी जोटा जो कल्चर स्टार्ट हेता है। ओके, ताका हम इंडिविजुअल कल्चर कहिथा। ओके, सेथिरे कोन हेता ना थिंकिंग एंड बिहेविंग जोथरे की कोन हेता ना ह्यूमन पर्सनली थिंक करथा है बिहेव करथा है। ओके, जेमिति कि सेमानकर ताको डिसलाइक ताको लाइक। ओके, ताको थिंकिंग पैटर्न सब किछि कोन हेता है ना पर्सनली सेटा डायमेंशन करथाय। देन कम्युनिटी कल्चर कोन ना डिफरेंट कम्युनिटी हैव देयर डिस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल कंपेयरिंग स्पेसिफिक मोड ऑफ कम्युनिटी। ओके, तो एठी कोन हेताय ना किछिटा कम्युनिटी थांती जो माने कोन करथन ना ताको लाइफस्टाइल को डिफरेंट वे रे से माने प्रेजेंट करथन। ओके, सेटा कोन हेताय ना कम्युनिटी कल्चर टा ताको डिफरेंट वे रे ही शो हेताय। देन नेशनल कल्चर कोन ना ईच नेशन हैव सम डिस्टिंक्ट माने गोटे नेशन ने गोटे ही कल्चर चलथिबो ताको हम नेशनल कल्चर बोली कहिथाउ। Then world culture kono a world community having common value of like such as cooperation, sympathy, social service, social awakening, social sensitive। okay, एगुड़ा सब कौन ना world wide culture। then हमें जानिबा material culture कौन material culture indicates all those man-made things and objects which human society created for its physical welfare, time to pace and war. It's such as clothes, utensils, home, road or ornament। Okay, ତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମେ କଲଚର କଣ ନା ଲୋକମାନେ କେମିତି କୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପୋଷାକ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାସନ କୁସନ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ହୋମମେଡ ଜିନିଷ ସବୁ କେମିତିକା, ସେମାନଙ୍କର ରୋଡ କେମିତିକା, ସେମାନଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାଇଲ ର ସରି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ କେମିତିକା। ଓକେ, ସେ ସବୁକୁ କଣ ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଲଚର ରେ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି
जिनस पत्र आसवा पत्र सब मटेरियल कल्चर जाउची ओके सेथरु लोक मानकर कल्चर भी डिफरेंशिएट हेइथाय देन नॉन मटेरियल कल्चर कोन ना एटा गला मटेरियल कल्चर एटा नॉन मटेरियल ओके नॉन मटेरियल कोन लोक मानकर एथिक्स तांको वैल्यू तांको एटीट्यूड ओके से सब केमती मॉडिफाई होची ओके तांको लैंग्वेज केमती तांको लिटरेचर केमती तांकर आर्ट स्टाइल तांको म्यूजिक ओके तांको कस्टम ए सब को नै नॉन मटेरियल कल्चर बोली कहथाउ Then characteristics of culture, acquired traits. Okay, culture is a sum of acquired trait from newborn to old age. Okay. तो जन्म हबार मरिबा जाके कौन ना कल्चर टा acquired traits भाबरे हमें differentiate करिथाउ then distinct entities कौन ना different society of the world have distinct culture pattern which establish the different identity of different nation okay तो वर्ल्ड वाइड रे कौन हेइथाय ना डिफरेंट सोसाइटी लोक माने डिफरेंट आइडेंटिटी देकी से माने निजरो माने नेशन रे से माने कोन करथन निजको प्रेजेंट करिथांती ओके देन ट्रांसमिशन कौन ना कल्चर ट्रेड and pattern are transmitted from one generation to another generation okay तो कल्चर टा कौन होइथाय ना one generation another generation रे चली आसीथाय देन यूटिलिटी कौन जानिबा now, one should see and adopt the culture, beauty, and excellence of all the culture that exists in the world. Okay. ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିକି ବା ଜାଣିକି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା କଲଚର ୟୁଟିଲିଟି କୁ ତାକୁ ସବୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉଟା କି କଲଚର ବ୍ୟୁଟିନେସ କୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବ ଓକେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦେନ୍ डायनामिज्म कौन ना कल्चर इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक ओके कल्चर होची ଗୋଟେ डायनामिक प्रोसेस जोटा कि इट चेंजेस एंड ग्रोज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माने पीरियडिकली और टाइम अनुसार कल्चर टा डायनामिक है कि चेंजिंगनेस रे परिणत हो जाए ओके देन कल्चरल लैग कौन Culture is the idea and physical object that represent a group or society. Okay, culture गोटे group or society ये रे represent ହେଇଥାଏ. It means a way of life of society. Society रे लोक माने केमिति तांको way of life को present करचोदी ताको हमें cultural lag बोली कहथाउ. Okay, culture बोली कहथाउ. Then culture surrounds the individual in from natural practice, sanction, knowledge, value, belief, faith, attitude, habit, tradition, law, practice, etc. Okay. The term cultural lag was coined by William F. Ogburn. Okay. First, a cultural lag जो word था, ये term था first के coin करते ना William F. Ogburn. Okay. Cultural lag is a stage of situation where non-material culture value do not adapt respond at the same rate changes in material culture. Okay. तो cultural lag होची गोटे एमती का stage जो थी कौन था ना non-material culture जो हमें पढ़ी लेटी कौन ना लोक मानकर तांको वैल्यू तांको एथिक्स ओके सेमानकर इंडिविजुअल ट्रेट तांको लैंग्वेज तांको लिटरेचर तांको म्यूजिक रिलीजन ओके ए सब को कह हिताय ना रेटेड चेंजेस इन मटेरियल कल्चर ओके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर रे कह हिताय ना चेंजिंगनेस भी आसीताय बोथ रे जोटा कि अडॉप्ट करथान लोक माने निज को रेस्पोंड करिकि ता माने बोथ कल्चरल माने नॉन मटेरियल ट्रेट रे आउ मटेरियल कल्चर रे ओके ए सब थरे कह हिताय ना चेंजिंगनेस रही किसी ना किसी then the gap between material culture and non-material culture is known as cultural lag okay now basically cultural lag कहले हमें कौन बुझते हो ना जो गैप टा रही है material culture और non-material culture भितर ताकू हमें cultural lag बोली कहता है okay reducing the gap between material and non-material culture is called cultural growth okay तो एक गैप को कम करिया कहले हमें जो स्टेप टा आगो को नहीं थाउ से गैप से स्टेप टा को हमें कौन कहता ना कल्चरल ग्रोथ बोली कहता माने संस्कृति रा वृद्धि बोली ताको हमें कहता ओके देन चलबा कल्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ओके तो कौन The first cultural lag refers to the notion that culture take time to catch up with technological innovation and social problem are caused by this lag. Okay. तो culture कहाँ पे ना time और date माने स्थान काल पात्र हिसाब रे culture technology रो हिसाब रे कहाँ पे ना innovation हैगी से social problem को सब कम करी ना कम करी परिबो. Okay. Then ताले कौन हवा ना cultural growth हवा. Then culture can be classified into two types. कौन ना material culture non-material culture जोटा मैं पढ़ी थिलु material culture कौन ना consist visual material object okay example कौन tool weapon vessels machine document clothing ए सब material non-material ले कौन जाउची ना मन लोकंकर cognitive thinking समनकर normative system okay include value तांका habits तांका knowledge तांका manner okay तांका tradition ए सब non-material ले जाउची
The cultural lag is the period of maladjustment which occurs when non-material culture struggle to adapt the new material changes. Okay. ତ ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯୋଉ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଲଚର ଆଉ ନନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଲଚର ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ it's in linked technology and determination which is development of social cultural value through technology. Okay, टेक्नोलोजी द्वारा ଆମେ କଣ କରିବା ନା सोसाइटी और कल्चर भैल्यू को कौन करिया डेवलपमेंट करि परिबा। ओके, देन कल्चरल लैग क्रिएट प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी इन डिफरेंट वे। ओके, तो ये जो लैग ता एठी सृष्टि हैला सेटा कोन प्रकार से प्रॉब्लम सोसाइटी पे सृष्टि करूची। ओके, डिफरेंट वे रे cultural lag take decision on implementation of new technology. Okay, then cultural lag is seen as an ethical issue. Ethical issue भी देखा जाता है a fail to develop social consequences. Okay, society रे माने कौनसी गोटे नियम माने सृष्टि कला बेले को सेठी कौन होता है ना प्रॉब्लम डा से जाता है। କାହିଁକିନା ଏଠି କଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ରହିଲେ କୋଉଥିରେ ସରି ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କଲଚରରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ ନା ଆମେ ଆମ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ନା ଆଉ ନନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମେ ଆମ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ଆମ ବିଲିଫ୍ସ ଆମ ଏଥିକ୍ସ ଉପରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ଆଣିବୁ ନା। ତ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ନବାକୁ ଯିବା ସେଠି ଲ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବ। ଓକେ, କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ସୋସିଆଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଓକେ, ତ ସାମାଜିକରଣ ବା ସମାଜ ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ ଟା लीड करता है। देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 emphasize education can and must bring about the fine synthesis between change oriented technology and continuity of cultural tradition. Okay, so education twin function कौन ना conservation of culture, modification and renewal of culture. Okay, तो शिक्षा कौन करता है ना दीटा फंक्शन क्रिएट करता है गोटा की कल्चर को कंजर्वेशन करके रखिबा जा चली आसुची सेमती चलेगी नबा बा मोडिफिकेशन करके ताको रिन्यू करके कल्चर को आगु बढ़ेबा। ओके, तो देन हमें जानबा कल्चरल प्लुरलिज्म कौन। ओके, कल्चरल प्लुरलिज्म इज द आइडिया फिजिकल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ओके, तो इट कल्चरल प्लुरलिज्म कौन ना इज द स्टेप गाइडिंग द कल्चरल ग्रुप दैट पार्टिसिपेट फुली इन द सोसाइटी। ओके, एमती गोटे ग्रुप जोटा की कौन ना सोसाइटी रे फुली पार्टिसिपेट करथुबे इट मेंटेन देयर कल्चरल डिफरेंसेस एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी। ओके, देन existence of many culture in a political state with their own culture is called cultural pluralism. Okay, तो विभिन्न प्रकार स्टेट रे सेमानकर विभिन्न प्रकार कल्चर को हमें कौन कहते हैं ना कल्चरल प्लुरलिज्म कहते हैं। माने डिफरेंट टाइप रे कल्चर को हमें कल्चरल प्लुरलिज्म कहते हैं। ओके, भिन्न भिन्न संस्कृति ताको हमें भिन्न भिन्न संस्कृति बोली हमें कल्चरल प्लुरलिज्म आख्या देथाउ। The cultural pluralism means करना peaceful coexistence among people from different cultural background। ओके, तो शांति और सौहार्दपूर्ण हिसाब रे जो माने सोसाइटी रे कौन करते हैं ना डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड रो बिलोंग करते हैं ताको हमें कल्चरल प्लुरलिज्म बोली कहथाउ। ओके, then characteristics of cultural pluralism कौन ना it is natural feature of any society as people are different and their culture। ओके, इटा ଗୋଟେ natural feature कोटा ना सोसाइटी रो कल्चरल प्लुरलिज्म तो डिफरेंट वे रे लोक माने सब सोसाइटी रे बास करती तो एटा नेचुरल जिंस इट इज ए सिंबल फॉर एनरिच्ड कल्चर फ्रेटर्निटी एंड पीस एक्जिस्टिंग इन एनी सोसाइटी। ओके, तो एटी कोन हेतै ना तो कल्चरल प्लुरलिज्म जोटा सेटा कोन करिथाय ना सिंबल ऑफ एनरिच्ड कल्चर। ओके, कल्चर को डेवलपमेंट करबे सहायता करता है फ्रेटर्निटी एंड पीस मेंटेन एक्जिस्टिंग सोसाइटी रे फ्रेटर्निटी और पीस मेंटेन ने कोन करता है ना सहायता करता है। देन cultural pluralism arises when different culture comes in contact with each other। ओके, तो एटी विभिन्न प्रकार संस्कृति रो बा सामाजिक लोक से माने जेतले मिली मिसी की चलिबे तो कोन हबो ना सेमानक भितरे जो को माने कांटेक्ट हेता इच अदर भितरे ताको हमें कोन कहते ना कल्चरल प्लुरलिज्म ए टाइम रे कोन कहते ना ग्रोथ करिथाय। देन पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी ओपन्स एवेन्यूज फॉर कल्चरल प्लुरलिज्म। ओके, तो then it is a characteristic feature of any society and provide individual with alternative way to life। okay, तो लोक माने केमिति सेमानकर माने लाइफ को अल्टरनेटिव वे रे सेमाने मेंटेन करूचंती सेमाने सोसाइटी रे केमिति निजे को प्रेजेंट करूचंती। ओके, तांको माने कल्चर को सेमाने केमिति प्रेजेंट करूचंती आ अन्य अन्य जने केमिति ता कल्चर को प्रेजेंट करछि। ओके, तो ए सब देखिया को मिलता है। देन
Cultural pluralism entail preserving existence culture. Okay, it preserve group pride, which contribute to the prevention of that culture and thus to welfare of its member. Okay, तो एसबू गोटे ग्रुप द्वारा कौन कर प्रिजर्व करा जो कौन समस्त कंट्रीब्यूट थाए ओके कल्चर को प्रिवेंशन करके कल्चर को गोटे माने ठीक मंगल माने सठिक भाव में लोक मैंने कौन करते सोसाइटी पालन करते देन कल्चरल प्लुरालिज्म एजुकेशन कौन ओके आंध्र एजुकेशन इम्पैक्ट कौन रोज कल्चरल प्लुरालिज्म में school is a miniature society and it is role to impart cultural presence and accept cultural pluralism in children okay स्कूल होची हमर गोटे मिनिचर सोसाइटी सेठी हमर देशर भविष्यत गढ़ी उठी थाए ओके सेठी कौन होई थाए ना सेठी भी पिला मानको ठीक भाबरे कल्चर रा माने प्लुरालिज्म ऊपर नॉलेज देबा आवश्यक ओके करिकुलम मस्ट बी डिजाइन टू रिप्रेजेंट कल्चर ओके कल्चर को जानिबा विषय रे करिकुलम को तैयारी हेबा निहाती भाबरे आवश्यक स्कूल शुड इनक्लूडेट गुड फ्रॉम एवरी कल्चर ओके तो सब कल्चर रा गुडनेस पिला मानको जणैबा आवश्यक ना कि किछि कल्चर रा बैडनेस पिला मानको भितर किछि नेगेटिव थिंकिंग एक सब किछि माने आनिबा ठीक नुहे ओके देन स्कूल शुड कंडक्ट एजुकेशनल प्रोग्राम एंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म ओके तो कल्चर ऊपर स्कूल माने कोन करे दरकार ना डिफरेंट कल्चर ऊपर से माने प्रोग्राम करिया आवश्यक जोथरे कि पिला माने डिफरेंट एक्टिविटी करिवे निजर कल्चर को नेके ओके it should create a psychological condition where individual can preserve their own right without causing threat to right of other different culture okay तो it psychological condition लोक मानकर केमिति हो दरकार ना इंडिविजुअली से मानको कल्चर को कोन करने प्रिजर्व करिवे से माने कल्चर को माने बजाय रखिबे ओके ना कि काहा को किछि माने कष्ट देकी से माने निज कल्चर को कोन करबे ना ठीक भाबरे परिचालना करिवे ओके डिफरेंट टाइप रे then education should provide experience for student teacher counselor and community to nature and practice pluralistic thought okay तो एजुकेशन एट कौन करिवो कौन प्रोवाइड करिवो ना एक्सपीरियंस प्रोवाइड करिवो पिला माननको आ टीचर माननको कोन ना कम्युनिटी रे केमिति ठीक भाबरे प्रैक्टिस हे परिबो ओके पिला माने लोक माननको भीतर डायनामिक थॉट रहइबो जो जा द्वारा कि कल्चर रा किछि माने कल्चरल लैग आसीबोनी ओके कल्चर रा माने लोक माने शिक्षा पाई कि ठीक भाबरे सोसाइटी रे निजको प्रेजेंट करिवे ओके देन आमे जानबा इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन कौन रोची ओके culture has significant impact of education shaping the curriculum teaching method and the value and goal of student culture has education have a symbiotic relationship where each complement the other okay तो कल्चर ऊपर एजुकेशन इम्पैक्ट कौन रहइबो ना लोक माने तांकर वैल्यू तांकर गोल्स ओके ए सब विषय रे अवगत हेबे ओके से माने निज रिलेशनशिप से माने सोसाइटी रे से माने निजो केंति मेंटेन करबे ए सब विषय रे जानिबे then how culture impacts education कौन होची ना करिकुलम द करिकुलम डिजाइन से हिसाब रे हबा दरकार जोथरे कि पिला नीड हिसाब रे पिला माने निजर वैल्यू एथिक्स आ कल्चरल नीड विषय रे जानिबे देन टीचिंग मेथड भी सेमति हबा दरकार जोथरे कि कोन ना करिकुलम टा कोन ना बोथ टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड हबा आवश्यक ओके जेमति कि कोन ना पिला माने निज क्वेश्चन को पचारि परथे और टीचर माने निज पिला मानकर माने प्रॉब्लम को सॉल्व भी करि परथबे ओके then value and goals कोन ना culture helps set value and goals of people through education okay then देखिबा learning capability a positive school culture can help student feel comfortable and safe okay तो पिला मानक भीतर कोन ना पॉजिटिव थिंकिंग रहबा निहाती आवश्यक जोथरे कि से माने एकेडमिक परफॉर्मेंस रे कोन बना इंप्रूव हबो then moral development school culture can help shape child personality okay तो स्कूल जो संस्कृति है सेटा कोन करथे पिला मानकर मोरल डेवलपमेंट रे साहाय्य करथे जोथरे कि पिला माने वैल्यू ट्रूथफुलनेस पोलाइटनेस ए सब कोन करथाती से सिखि थांती निज कल्चर विषय रे से माने किछि नुवा ज्ञान से माने जानिया को पाई थांती देन रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन एंड रिवाइवल ऑफ कल्चर ओके तो कल्चर रो प्रिजर्वेशन ट्रांसमिशन और प्रमोशन रे एजुकेशन ना माने रोल्स कोन रहउछ ओके तो कौन रहिला माने कल्चर होची गोटे एमती का आइडिया जोटा कि गोटे फिजिकली ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी ओके तो गोटे ग्रुप ऑफ सोसाइटी के कल्चर कोन करतले रिप्रेजेंट करथाय ओके देन सेई ग्रुप रो से लोक माने तांको वे ऑफ लाइफ को हमें कोन कहिता ना सोसाइटी बोली कहिता देन कल्चर सराउंड इंडिविजुअल इन फ्रॉम रिचुअल्स प्रैक्टिस सैंक्शन नॉलेज वैल्यू बिलीव्स फेथ एटीट्यूड हैबिट ए सब को नै कोन ना हम कल्चर सराउंडिंगली हम सोसाइटी आमे हमको निज को
present କରିଥାଉ। Then education is an element of society and also the most important tool that allows the transfer of culture between generation. Okay, ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହେଇଥାଏ କଲଚରର, ସେଇଥିରେ ଶିକ୍ଷା କଣ କରିଥାଏ ନା ମୋଷ୍ଟଲି ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ। ଓକେ, ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ପାଇଥିବେ ସେମାନେ କଲଚରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ଦେନ୍ each time a culture is lost we lose an irreplaceable and exquisite way of being। ओके, तो बेले बेले कौन होता है ना हम किसी माने बिना एजुकेशन ने बा विदाउट एजुकेशन ने कल्चर कौन होता है ना ठीक भाବରେ यूज होने थे मिस यूज हो जाता है। ओके, कल्चर इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड इट प्रिजर्वेशन एम्फसाइज द नीड टू प्रोटेक्ट रिस्टोर एंड हनर ऑल फ्रॉम कल्चर डाइवर्सिटी। ओके, तो ह्यूमन प्रथम तार माने गोटे मनुष्यर प्रथम माने तार दायित्व कौन होची ना निज कल्चर को एम्फसाइज करिकी ताको प्रोटेक्ट करिकी ताको रिस्टोर करबा। ओके, निजर मानविकता हिसाब रे कल्चर डाइवर्सिटी को सम्मान जणाइबा। देन रोल ऑफ एजुकेशन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर कौन जानिबा। ओके, कल्चर को प्रिजर्व करियारे एजुकेशनल रोल कौन होची ना सोसाइटी मेक एफर्ट टू प्रिजर्व इट पर्टिकुलर कल्चरल हेरिटेज बाय ट्रांसमिटिंग इन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन कल्चर को प्रिजर्व करियारे वाइटल रोल निभाता है। ओके, then education is only source preservation of national value ideal experiment and observation। ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଉତ୍ସ ଯୋଉଟା କି କଣ ନା କଲଚର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ରେ କଲଚର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଇଡିଆ ତାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଅବଜରଭେସନ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ ଇନ ଫ୍ରମ କରିକୁଲମ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ କଲଚରାଲ ହେରିटेज। ଓକେ, ତ एजुकेशन कौन करते हैं ना कल्चरल प्रोटेक्ट को माने कल्चरल हेरिटेज को कौन करते हैं प्रोटेक्ट करके प्रिजर्वेशन देता है। देन आउ कौन होता है एजुकेशन सेफगार्ड प्रिजर्व द कल्चर पैटर्न। ओके, तो एठी कौन होता है एजुकेशन बहुत टाइप रे कल्चर को कौन होता है प्रिवेंट करता है। ओके, कल्चर माने पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो सब माने रिचुअल्स जो सब माने तार लॉ जो सब तार एस्पेक्ट सब रहे ताको एजुकेशन इम्प्रूवमेंट करिकी ताको ठीक भाबरे ट्रांसमिट करिकी लोकमानक भितर ताको प्रिजर्व करिकी रखिଥାଏ। ओके, देन जानिबा रोल ऑफ एजुकेशन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर मीन्स कौन ना शिफ्टिंग ऑफ कल्चरल वैल्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, इन व्हिच फंडामेंटल कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर रे भी कौन ना एजुकेशन मेजर रोल निभाई थाए। ओके, कल्चरल हेरिटेज भी कौन ना एजुकेशन काम करते जोथिरे कि कल्चर को प्रिजर्व करिवारे लोक माने सहाय्य होइथाय माने ठीक भाबरे कल्चर को प्रिजर्व करिवारे से माने कहन ना सक्षम होइतांदी। देन एजुकेशन प्रिपेयर गुड सिटीजन। ओके, शिक्षा गोटे माने कोन आजिर शिशु काल नागरिक तो गोटे नागरिक गुड सिटीजन हबा पछरे कारण शिक्षा हाथ थाए। देन education make teacher conservator of culture and architect of future culture student learn from them। ओके, तो एजुकेशन कौन करता है ना एमिति शिक्षक कंजर्वेटर और कल्चर को बंचे रखिबार एमिति किछि वैल्यू लोक मानकु सिखै थाए। ओके, जोथिरे कि कोन ना स्टूडेंट माने बस तांको छात्र माने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली से माने कल्चर को प्रिवेंट करिवार ट्रांसमिशन करिवार कलाटा सिखि रहिथांती। ओके, then in a changing society education system prepare the young adjustment to any changes। ओके, एजुकेशन सिस्टम कौन प्रिपेयर करछि ना बिना चेंजिंगनेस रे चेंजिंगनेस आनिबा को सोसाइटी रे जोथरे कि कोन ना कल्चर ट्रांसमिशन को ठीक भाबरे करि हबो। ओके, देन जानिबा रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोशन ऑफ कल्चर। ओके, कल्चर को प्रमोशन करिवार एजुकेशन रोल कोन रोल एवरी नेशन लॉन्ग फॉर द प्रमोशन इट्स सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, तो national system education and develop to fulfill this national desire। तो एजुकेशन को प्रमोशन करिबारे कल्चर रो भूमिकाटा सॉरी कल्चर को प्रमोशन करिबारे एजुकेशन रो भूमिकाटा कोन रोछ ना एवरी नेशन लॉन्ग फॉर द प्रमोशन। ओके, तो सब एवरी नेशन ने माने सबु देश रे कोन बजा ना कल्चर रो प्रमोशन केमिति हेबो। ओके, सिविलाइजेशन माने सामाजिक नरनारी को मध्य रे सामाजिक लोक मानक भितरे केमिति कल्चर को प्रोवाइड करा जिवो। ओके, नेशनल सिस्टम एजुकेशन बा एजुकेशन द्वारा कल्चर रो केमिति डेवलपमेंट हबो। ओके, ए सब ए डिजायर सब केमिति फुलफिल हबो एथिरे एजुकेशन कोन करथे ना सहाय्य करिथाय। देन सोशल वैल्यू कैन नॉट बी प्रमोटेड विदाउट ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ओके, सोसाइटी रे जेकोनोसी वैल्यू को बा जेकोनोसी गोटे प्रथा को बा जेकोनोसी गोटे नियम को आमे ठीक भाबरे प्रमोट से पर्यंत करि पारिबानी जे पर्यंत हम पाखे सिस्टमिक प्रोसेस रे एजुकेशन ठीक तथ्य हम पाखे नथिबो। ओके, देन आमे जानिबा
Education help in promotion of cultural and to do state and national government. Okay. तो एजुकेशन कोथरे हेल्प करते हैं ना कल्चरल प्रमोशन को माने आगो को ना बारे ओके देन एस्टैब्लिश स्टेट नेशनल एकेडमी एजेंसी फ्रेम पॉलिसी इम्प्लिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर ए सब माने सृष्टि करा जायछि एस्टैब्लिश स्टेट एंड नेशनल एकेडमिक एजेंसी ओके ए सब क्रिएट करा जायछि कोन माने कल्चरल प्रमोशन पाए देन ललित कला एकेडमी इट वाज a step of first prime minister of India after okay सब कल्चर को माने आगो को नवा पाई ललित कला एकेडमी सृष्टि करा जायछि देन संगीत नाटक एकेडमी ओके এটা কাই ইতলা ইন্ডিপেন্ডেন্স রে which aims to promote culture and art from India both with and outside India okay हम इंडिया कल्चर को both इंडिया रे आउटसाइड रे प्रमोशन करिबारे ताकू सेति भाई ललित कला एकेडमी ठीक करा जायतिला माने ताकू माने एनाक्ट करा जायतिला ओके देन संगीत नाटक एकेडमी इट also known as National Academy of Music Dance and Drama okay which established to promote various promote performing art of India okay then archaeological survey ହେଇଥିଲା okay of India ASI जोटा कि under the Ministry of Culture aims conducting research activity in the field of archaeology okay आ under रे कौन ना archaeological survey ହେଇଥିଲା जोतरे कि कौन ना conserving promoting preserving cultural monument okay जो सब monument जो सब मूर्ति कला स्थापत्य हमर रहिछि ताकू सब प्रिजर्व करिबारे कौन ना cultural archaeology जो सर्वेटा ହେଇଥିଲା सेति पई क्रिएट करा ଯାଇଥିଲା ओके देन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एंड एक्सप्लोरेशन ओके ए सब को एग्जीबिशन करिबारे आ तो एक्सप्लोर करिबारे एई आर्कियोलॉजिकल सर्वेटा क्रिएट ହେଇଥିଲା प्रोटेक्टिंग साइट नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस ओके से सब साइट से सब जगह को प्रोटेक्ट करिया को ओके इंटरनेशनल आ नेशनल साइट रे और इंपोर्टेंस को वृद्धि करिबा को आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्रिएट करा ଯାଇଥିଲା ओके एएसआई देन जानिबा सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सीसीआरटी के बेत कौन हेतला ना सीसीआरटी ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटी एंड एस्थेटिक ऑफ इंडिया आर्ट एंड कल्चर ओके इंडिया रो ब्यूटी और तार एस्थेटिक को ठीक भाबरे बुझिया पई सीसीआरटी सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्स ट्रेनिंग एटा प्रमोट करा जायतिला ओके इट फोकस ऑन रोल कल्चरल एग्रीकल्चर साइंस स्पोर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऊपर फोकस ओके पॉलिसी इम्प्लिकेशन कौन रोची ना गवर्नमेंट टेक स्टेप टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड प्रमोट नॉलेज कल्चर को प्रिजर्व करियारे कल्चर को प्रोटेक्ट करियारे ओके पॉलिसी इम्प्लिकेशन हेची जोतरे कि नेशन प्रोवाइड एनकरेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेस साइंटिफिक एंड स्टडी एजुकेशन ओके तो नेशन कौन प्रोवाइड करूची ना हमको एनकरेजमेंट करूची किछि अपॉर्चुनिटी देउची साइंटिफिकली जोतरे कि एजुकेशन को ठीक भाबरे हमें नै कि शिक्षा को ठीक भाबरे ग्रहण करे कि हमें हम कल्चर कौन करिपरिबा ना ठीक भाबरे पॉलिसी इम्प्लीमेंट को ठीक समय रे लगेगी जोथरे कि हमें कल्चर को प्रिवेंशन करिपरिबा ओके then national department should coordinate for smooth functioning and implementation of policy okay NGO should work विभिन्न प्रकार NGO क्रिएट हेछि जोथरे कि हम कल्चर को कौन करना प्रिजर्व करिपरिबा ओके then देखिबा efforts should be taken to reduce the gap between the traditional knowledge okay तो प्रति ह्यूमन बीइंग रो एफर्ट्स कौन करता है ना जो हमर गैप रहउची जनरेशन भीतर ट्रेडिशन भीतर ओके ताको कमेबारे सहायता करता है ओके जदि हम कमेया को चाहबा कमे पारिबा then excessive harvesting and biological resource should be stopped but the right and land property should be property approved okay तो excessive harvesting बेसी हार्वेस्ट करबा biological resource should be कौन stopped but the right to land and property should be property approved okay then civilians should be encouraged to participate in policy and plan for development तो एमिति policy माने implement हवा दरकार ओके जोथरे कि कोइ परथबो ना लोक माने निज लैंड प्रॉपर्टी आ हार्वेस्टिंग को कोन करि परथि ना ठीक भाबरे प्रमोट करि परथबे ओके आ सिविलियन माने कोन करि परथि ना एनकरेज होते को पे ना निज को किछि पॉलिसी रे प्रैक्टिस करिया पई पार्टिसिपेट करिया पई ओके तो जोथरे कि तांकर डेवलपमेंट हबो देन रोल ऑफ एजुकेशन इन revival of culture कौन ना revival of culture heritage is an important culture aim of education okay then हमें जानिबा तो एथिबे करना एजुकेशन रेस्पॉन्सिबल हेता है कल्चर ग्रोथ द रिवाइवल कल्चर हेरिटेज को मेंटेन करिबे ओके इट कॉर्पोरेट फीलिंग्स रेस्पेक्ट द कल्चर एंड साइन ऑफ प्राइड फॉर नेशन ओके तो कल्चर रिवाइवल पे एजुकेशन मोस्ट वाइटल रोल इन्वॉल्व करता है ओके in absence of cultural heritage nation loses its identity which is revived by education okay education provide a group identity to the culture and bring unity in diversity to the nation okay तो education को प्रकार साहाय्य करता है
ना कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करिबारे ओके निज आइडेंटिटी को रिवाइव करके एजुकेशन को ठीक भाबरे माने माने कल्चर प्रिजर्व रे ताको मेंटेन करिबारे देन एजुकेशन प्रोवाइड ग्रुप आइडेंटिटी ओके टू द कल्चर एंड ब्रिंग यूनिटी माने कल्चरल बेसिक्स रे हमें केमती यूनिट को मेंटेन करिकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करिकी हम माने नेशन को ग्रोथ करेबा ओके कल्चर रिवाइवल रे हमें माने ठीक भाबरे हमको ताको मेंटेन करबा ताको तापरे कोन करते ना अफेक्ट पकई थाए देन एजुकेशन एंड कल्चर कोन जानिबा एजुकेशन एंड कल्चर आर इंटिमेटली एंड इंटरगाली कनेक्टेड हैंड्स ओके तो एजुकेशन एंड कल्चर कोन ना इंटिमेटली और इंटरगाली से माने बोथ आर कनेक्टेड द डी कल्चर पैटर्न ऑफ सोसाइटी कंडीशन its education pattern for example if our society has a spiritual pattern of culture then its education procedure will emphasize the achievement of moral and internal value of life. On the other hand, it is the cultural pattern. Okay, pattern of a society is materialistic. Then the natural its education pattern will set for the attainment of material value, which promote pleasure of sense and material comfort. Okay, basically, it है कौन जानिबा ना एजुकेशन एंड कल्चरल को ना को माने इंटरगाली और इंटिमेटली से को कनेक्टेड ओके तो एटी एग्जांपल ले कोन होछि ना सोसाइटी हैज स्पिरिचुअल पैटर्न ऑफ कल्चर देन इट्स एजुकेशन प्रोसेस वी एम्फसाइज जदि हम सोसाइटी गोटे स्पिरिचुअल पैटर्न रहउछि बा सोसाइटी जे कोनसी पैटर्न रहउ ताको एजुकेशन कोन करथाय ना एम्फसाइज करथाय सोसाइटी रा मोरल वैल्यू तार इंटरनल वैल्यू रे ग्रोथ करबारे ओके तो सोसाइटी और एजुकेशन बोथ आर को माने माने बोथ आर को रिलेटेड ओके परस्पर पर निर्भरशील से माने ओके तो देन जानिबा से माने माने परस्पर वैल्यू मेंटेन ने एजुकेशन और कल्चर कोन करथांती ना गोटे सेंस बा गोटे माने कंफर्ट जोन को क्रिएट करथांती ओके देन influence of culture in education कौन ना and of education कौन ना the meaning of aim of sorry it aim को end कर दे sorry the meaning and aim of education determined by the cultural ideal value and pattern of a society okay on curriculum कौन the system education tries to realize cultural needs of society through curriculum which condition all educational activity in and program okay तो basically कौन ना एजुकेशन सिस्टम एमिति हबा दरकार जोथरे कि कल्चरल नीड सोशल करिकुलम माने तार जो कंडीशन सब रहउची ओके एजुकेशनल एक्टिविटी ए प्रोग्राम सब कहि परबे ठीक भाबरे इन्फ्लुएंस करथो का को ना कल्चर को ओके देन हम जानबा मेथड ऑफ टीचिंग कोन ना मेथड ऑफ टीचिंग और इंटिमेटली कनेक्टेड चेंजिंग कल्चर पैटर्न ओके कल्चर पैटर्न को चेंजिंग करिबारे तार मेथड को ठीक भाबरे परिचालन करिबारे हबा दरकार ओके देन हम जानबा time education was teacher oriented but current scenario the education is child centric okay तो current situation में कौन ना education केमिति जे ना child centric okay जोथरे कि पिला माने निजर प्रॉब्लम को सॉल्व करियारे ठीक माने से माने निजे प्रॉम्प्ट हे पारुचंती ओके से माने बिना बाधा विघ्न टीचर को से माने निजर माने किछि प्रॉब्लम रहले से माने सॉल्व करि परचंती इन स्कूल कोन स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी स्कूल को गोटे मिनिएचर सोसाइटी कहिथो जोथरे कि कोन विभिन्न प्रकार प्रोग्राम आ विभिन्न प्रकार स्कूल ले ऑर्गेनाइज रहइथाय जोथरे कि पिला माने ताका कल्चर विषय किछि आइडिया आ वैल्यू आ सोसाइटी से माने केमिति निजे को एस्टैब्लिश करिकि ऑर्गेनाइज्ड वे रे से माने केमिति निजे को परिचालन करिवे से सब सिखिथांती ओके इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन कोन जानिबा ओके केउ सब जिंस कल्चर को इन्फ्लुएंस करूची जोटा कि एजुकेशन इंपैक्ट पकोची प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर ओके कल्चरल प्रिजर्वेशन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर कल्चरल ट्रांसमिशन डेवलपमेंट ऑफ कल्चर कल्चरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर कल्चर को मेंटेन करि आसीबा तापीडी ओके हेल्पिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ओके परस्पर को कोन करिबा ना माने हेल्प करिकि निजर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करबा ओके देन प्रमोट ब्रदरहुड ओके भाईचारा प्रति ध्यान देकी कोन करिबा ना प्रमोट को माने ब्रदरहुड को प्रमोट करबा ओके परस्पर प्रति माने ठीक व्यू पॉइंट को राइट रखिके ओके गुड व्यू पॉइंट रखिके परस्पर को सहायता करिकि ब्रदरहुड को प्रमोट करबा ओके सो यूनिट 2 आज हमर कंप्लीट हो गया नेक्स्ट समय यूनिट 3 पढ़िबा नेक्स्ट वीडियो रे ओके सो द एंड